I specifically talk about the Gen Zs जो अभी मार्केट में हमारे एंटर हो रहे हैं, उनके अंदर there is a lot of thirst for innovation and value addition. So I believe that is the best part of our current IT breed. लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुछ challenges भी है. I believe कि उनको एक competitive platform नहीं provide किया जा रहा जिसमें वो अपने potential को optimally utilize कर सके. Be it cyber security, custom software development या AI driven platforms. Normally हो ये रहा है कि अभी भी हमारे academia में we are still using the taught method, जिसमें जो text books हमारे पास publish हो गई हैं, हम उसके accordingly एक जैसे कहते हैं ना do as directed way में हम बच्चों को अभी भी पढ़ा रहे हैं. एक proper जो हमारी pedagogy है उसमें वो change नहीं आया, जिसके थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर इंक्विजिटिवनेस जो है उसको मजीद एनहांस कर सकें, उनकी इनोवेटिव कैपेबिलिटीज को मजीद ऑगमेंट कर सकें. Unfortunately, that is still missing in our higher education system. Right. और secondly, when I talk about the corporate dilemma of Pakistan, ज्यादातर हो ये रहा है कि जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं via outsourcing, हम specifically expectation यही lay down करते हैं that they need to meet the client expectation, या for the time being हमारा project complete हो जाए, जो हम लोगों ने उससे रेवेन्यू जनरेट करना है या बिजनेस वैल्यू जनरेट करनी है वो हमें मिल जाए. उसके बाद कोई और प्रोजेक्ट आ जाए, कोई और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के करनी है. ये एक साइकिल जो है वो चलता जा रहा है. उससे होता ये कि इस तरह का जो टैलेंट है उनकी कैपेबिलिटीज अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. उनको एक ऐसा रूम या एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है जिसमें वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को ग्रूम कर सके और अपने स्किल सेट को इवॉल्व कर सके. तो चूंकि ये एक विन विन सिचुएशन हमारे कंपनीज और जो हमारी यूथ है उनके दरमियान जब क्रिएट नहीं हो पाती, तो फिर उससे होता यही है कि हमारी कंपनीज का जो एट्रिशन रेट है वो इम्पैक्ट होता है. हमारे अगर आप पिछले जो 5 से 8 साल में जो यूनिवर्सिटीज ने टैलेंट प्रोड्यूस किया उसमें काफी सारे ग्रेजुएट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ऑन एवरेज 2 ईयर से कंपनी को सर्व किया. उसकी वजह यही है कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जब उनको लगता है कि उनका स्किल सेट स्टैग्नेट हो गया, सो दे स्विच टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन. और फिर जो ब्रेन ड्रेन हमारे मुल्क में हो रहा है उसके पीछे भी यही एक रीजंस है. So to summarize what I would say, the best part is that the current IT breed, they are having a lot of thirst and a lot of hunger for innovation and value addition. But the challenge which I foresee right now is that they are not getting the right platform, be it the gap which exists between the academia and industry, or the atmosphere of innovation which our companies should be providing them. So that is a challenge which I believe the professionals like me and you need to come up with different strategies कि हम इसको कैसे overcome कर सकते हैं. Right. I certainly agree with what the two gentlemen said, that we need to have sufficient budget allocation to provide the right platform to the youth. But one thing which I would like to add here is that some facets could not directly be linked with budget allocation. For example, if I talk about aligning an actionable strategy for bridging the gap between industry and academia, that cannot be directly linked to a whole sum of budget or funds allocation. Right. That is something which requires a proper strategy. Similarly, if I talk about accelerating innovation with agility, that does not require a whole lot of investment. That is more about building the culture in the corporate realm of Pakistan. So when we talk about the mindset or bringing the culture, so that is something which cannot be directly tied to money and the funds allocation. That is something which we can do it within the budgetary limitations and we can receive a lot of value in return. So we need to categorize two distinct aspects. The first aspect which requires budget allocation, and by that I mean providing the platform to the youth or providing them the sufficient training resources, providing them a platform to gear more startups. Yes, I do agree. But when it comes to the culture and mindset, that is something which we can do within our current budgetary constraints. So if we start focusing more on the latter, we would be able to achieve a lot. और इसमें बस मैं एक point add कर दूं. If we compare ourselves with India, I'm not sure. Maybe Zahid would be able to tell better on that because he's more aware about the stats and figures. I'm not too much aware about that. But कुछ साल पहले, when India was generating $142 billion annually from their IT economy, at that point we were generating only $12 to $14 billion. Reason kya hai? It's not that they were having a lot of budget and we were focusing on war on terror. When we talk about their higher education infrastructure, the kind of mindset which they inculcated in youth, ultimately that laid down a solid foundation for producing the IT breed, which ultimately went on to become the CEOs of Microsoft, Googles and all that. So वो एक launching pad India ने provide किया था. Unfortunately, अभी हम उस stage पे नहीं है. मतलब as a nation we should accept it.
ہمارا کلچر ہمارا مائنڈ سیٹ ابھی بھی بہت پیچھے ہے. ہمیں پہلے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یس جب ہمارے ملک کے سوشو اور اکنامک کنڈیشن بہتر ہوگی تو ہمارے پاس پیسہ بھی اتنا آ جائے گا کہ ہم لوگ اپنی آئی ٹی کی پروڈکٹیوٹی کو ایکسلریٹ کریں. بٹ پرائمرلی وی نیڈ ٹو فوکس آن برنگنگ اپ دا کلچر اینڈ دا مائنڈ سیٹ.